Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Quick recap of yesterday's session. Yesterday we discussed about data types, right? First, number data type. I hope you remember number data type for any type of numbers, whole numbers, floating point, and that numbers which are whole number you can write in octal, hexadecimal, decimal, binary, floating numbers if you have, then fixed notation, scientific notation. Then we discussed about string data type, Boolean data type, undefined, null, symbol, big int, clear? Then about object, array, getting all that in yesterday's session. One more is remaining, that is function. JavaScript treats function also as a object, and therefore this will also come under data types. It will come under non-primitive reference category. So function is also a object. But what is a function? You can say it is a reusable code block. So you have written a code block, you have given some name to it, and you can call that code block any number of times. Okay. So in detail about functions will come in the future, like functions and then how to pass parameters, lambda functions, that is called as arrow function, scope and all. Lot of things will come again. Now just remember function is a reusable code block. It is performing some task. You're giving some name to it, and using that name, you can call that function. The code will get executed. You can define once, call it any number of times. Okay. And how a function is defined? Very simple. Keyword function is there. Then you have to give name of the function, whatever function name. Then there is a provision of passing parameters and all. And then the block of function, which is written in open brace, close brace. And within that, you'll write any code block. It can be simple to any complex code. Now, this is just the definition. Then you have to call it. You can call it by this name, getting whatever name you have given, round bracket. At that time, you can pass actual values, arguments. They will come in this parameter, and then on that parameter, this task will be done. At the end, it may return also something. So all that in detail, appropriate topic will come. So you can call it. But just remember this function name is also an object. Python, JavaScript treats it as an object. Okay, so function, a block of reusable code. You have to use keyword function, the name of the function, then round bracket. If you want, you can pass parameters. Parameters means those are variables only, which can be used within that body. And then the body of the function between open brace, close brace. Inside, you can perform any task. At the end, you can return something. I'm returning some string. And then you can call it any number of time you want. Getting? So once defined, you can call, okay, any number of time. Okay, I'll just take one simple example. Function. Suppose name of the function I'm giving greet, and then return hello. Okay? Or I'm writing hello world. And then you can call that function. So whenever you're going to call it, obviously it's going to return. So that return value, if you want to print, then you can call it in a console statement. Okay? Greet. This way. Here, directly you can run. Okay, you can see.
When I call that console.log greet, it goes to greet function. Greet function is returning hello world. That hello world string comes back. So that string, whatever is returned, we have given to log. Log displays it on the console. Okay. If you want, you can check the type of the greet function. Type of greet. See, is it giving function? Name of the function is also type. Name of the function is also object. It is considered under category function type. Okay. Now, these were all about the standard data types, the primitive types and the non-primitive type. Like in primitive, which we took numbers, then string, null, undefined, boolean, big int, they were there. And in non-primitive, like array, object, function, all they come under non-primitive. Now, next, we have to start with operators and all. But before that, we need to make the clear concept about where, let, const, what all that things are. Okay. So already you know JavaScript is already, you know, if you're putting any comment or anything, I will not see the comment. If you want, you can unmute and ask me. Okay. So we have discussed that JavaScript is a loosely type and dynamic type. Actually, there is no concept of declaration. You can directly start assigning the value, what value you assign, that is its data type. The same variable can change its data type. But still, JavaScript say it is a good practice. You can declare it with the help of where keyword, let keyword, const, okay. And the old style, that is not doing only and not using only any of this and directly starting assigning the value, which is totally not recommended. Correct? So how to do this declarations and what are their characteristic features? All that first we will make it clear. We'll first make clear about let, const, where, and not writing anything. Okay, all that, and then we will dive into the operators topic. So first way we have to see, that is declaring using where keyword. This is assumed to be the old style, old school way, pre ES6. ES6 means 2015 version. And before that, the variables were declared using where keyword. Where and then the name of the variable, whatever the name of the variable. Okay, so that was the style. But what is the peculiarity about it? Okay, about this where. So first remember, if you create a variable using where keyword, its scope is function level. The minimum scope is function level. It cannot have a block level scope. Understanding? Like I'm creating a block if, and inside if I'm writing where x. It is not going to create this variable x for the if level. And the if block scope is not there. Its scope is at function level, minimum. Minimum scope is function level and then the entire script level. Getting? So you cannot have block level scope using where minimum scope is, the nearest scope is function level and then the script level. Okay? And using where, if you're doing redeclaration, it doesn't give any error. Okay? Where and if after some time I'm creating a same variable and redeclaring it using where, no problem. Getting? It doesn't give any error. So point one, you have to remember about where they are function level scope, no block level. The minimum scope is function. And then after that, it is the script level, the entire script. And redeclaration allowed. If you're creating a variable I equal to 10, and after some time where I equal to 20, no problem. It will just reassign that. It will just put 20 in I, the old value is gone. Redeclaration is allowed.
Getting? And reinitialization is also allowed. Means you can again reinitialize it if you want. You can modify the value I equal to 10, and after some time, I'm not doing redeclaration. I'm just assigning a new value to it. Will do. Okay, I equal to 10. After some time, I equal to 100. Will do. And very important fourth point, that is these where variables which are declared using where keyword, they are hoisted. Hoisting is a concept. Okay, now you'll say, what is hoisting? Hoisting concept is applicable when you're using a variable before its declaration. Getting? If in your script, if you're using any variable, suppose console.log, and directly I'm trying to print value of a variable, and that variable is declared afterwards. Listen carefully, yeah? These are some important concepts which are from interview perspective also very important. So console.log, I'm printing value of I, and the variable I is declared later. Getting? So you're declaring later and using first. So what happens is before starting executing the script, what your JavaScript, many times, sometimes by mistake, if I say Python interpreter, so please see to it by mistake, your JavaScript engine, okay, what it will do before starting execution of your script, it will check if there are such declarations. Which declarations you're using first and declaring later. It will shift only the declaration, not the initialization, to the beginning of the scope. That is called hoisting. So you have used first, declared later. Now the script is about to execute. Before the script execution start, your JavaScript engine will just move these declarations to the beginning of the scope. Getting? But when it moves it, it is not initializing. Only the declaration is moved. And therefore, it will be treated as undefined. Understanding? No error, but it will treat that variable as undefined. You understanding? So you are trying to print the value, you are declaring it later, declare and initializing later. So what happens is it will not give error. Some languages will sure give error because strict languages like Java or C, in that hoisting concept is not there. You cannot do first use and then declaration. That language says strictly first you have to declare and then only you can use it. But as this is a loosely typed language, it allows you can use it, you can declare later. But the concept of hoisting come, it just shifts the declaration to the beginning of the scope. And when it shifts to the beginning, the variable will automatically be undefined. So for this statement, no error come, but it treats I as undefined. Same is the case applicable for functions also. Like if you have called a function first, greet is called first, and you have defined it later. Okay, function greet. No error. The function will get successfully called. Why? Because the functions are also hoisted. Actually, I was talking about where, but I wanted to tell who all are hoisted. So, where keyword are hoisted means the variables which are declared using where are hoisted. Same way, functions are also hoisted. So, in this case, also you have called first, defined later. No problem. This function gets successfully called and executed. Why? Because before starting the execution of this script, understanding, your JavaScript engine hoists this function. Means it is shifting it to the beginning of the scope. It is shifting this to the beginning of the scope. And as it is shifted, it is okay to call it because the definition is shifted up before the call. Because who has done that? Your JavaScript engine before starting execution.
In reality, actually, the script doesn't modify. We say that it is shifted to the beginning, but your script is not getting modified. In memory, it loads it first. What happens is your JavaScript engine, before it starts execution, it will first load all these functions first in the memory and then start execution. So as it start execution, these functions are already loaded in memory. No problem. It will get called. Okay? So with an illustration, I'll show you all these features, but you have to remember that where our function level scope, they don't have block level. The minimum scope is function level. They can be redeclared, they can be reinitialized, and they are hoisted. But when they are hoisted, they are of which type? Undefined type. Okay? So I'll show you all that features with small examples. First point you have to remember, it is function scope. The minimum scope is function, and then the scope increases to the script level. Get it? It doesn't have any block level scope. We will be learning about it. Can be redeclared. It doesn't complain. Where I, after some time, again where I. It doesn't complain. Can be updated. Getting guys? You can modify the value. Hoisted to the top of their scope. Hoisting concept I already told you. Hoisting means if any variable is used before its declaration. You're using it and then declaring. Then the declaration is shifted to the beginning of the scope. So when the declaration is shifted to the beginning of the scope, that process is called hoisting. Okay. So hoisted to the top of their scope, but they are not initialized. They remain undefined. Means they will be of what type? Undefined. So one by one, all concept with an example I'll show you. Okay. See here. First about redeclaration I'm telling. I created one variable name with value Alice. And then I'm redeclaring the same variable with the value Bob. No complaint for redeclaration. The same redeclaration, if you do it by let, for the second declaration, it will complain. Understanding? Therefore, modern JavaScript highly recommend that avoid using this old school way. That is where prefer declaring variable using let or const. Get it? But I need to tell you, na, the older style was what, and still it is carry forwarded. It is still allowed to use in today's script as well. So redeclaration allowed. So when you are trying to print the value, it takes the latest value that is Bob. Okay, I'll show you with the script. Some more examples I'll show you. Don't worry. Okay, where demo. But first listen completely, and then if you have doubt, then you can ask me. First, understand complete. Okay, because some more things I have to tell you. It may happen that you have got a doubt, and it may get clear after me showing some more examples. So first wait, first let me show you all the examples, and after that, if you have some doubt, then you can ask me. Okay? Okay. So redeclaration allowed. Suppose I'm taking name equal to Ram, and after some time, if you want immediately to print it, you can print. Okay? Console.log and print and see that name. Previous script, I'll just stop it. Okay. And again, I'm declaring a variable with the value Sita and console.log and then name I'm putting. No problem. It doesn't give any error for the redeclaration. Just stores this new value. The old will get replaced. Now, if you print and see, you'll get the appropriate output. See, the first is having Ram, and then when you redeclared it, it is becoming Sita. Okay? In this only, some more things I'll tell you. It is having which level scope? Function level. The minimum scope is function. The minimum scope is function.
and then it extends to script level, the entire script. So like in this case, I'm creating a block. This is a if block, if 10 less than 20. This is a block. And inside that block, I'm declaring one variable. And I'm declaring it using where keyword, where x equal to 20. So by seeing this, generally we feel as if that x will have a scope for this block, only restricted to this block. Means when the block is over, that x will get destroyed. Getting? Now some may have a doubt with what is basically scope. Scope means the lifetime of a variable, or you can say scope means the section of code in which the use of that variable is legal. Getting? जिस कोड में हम वेरिएबल को यूज कर सकते हैं हम बोलेंगे वो उसका स्कोप है जिधर उसका यूज इलीगल है हम कहेंगे इट इज आउट ऑफ द स्कोप और इन शॉर्ट द लाइफ स्पैन when it is created, when it is destroyed, and where it is used. कब create हो गया, कब destroy हो गया, and किस section में वो use होता है, उसका वो उसका scope बन गया. Getting? So we think as if this X is declared using where within if. तो इसका scope if तक रहेगा, if खत्म तो ये destroy हो जाएगा. But no, as I said, where is having which level scope? It is not having block level. Minimum scope उसका function है. तो ये तो हमने फंक्शन में नहीं लिखा है तो ये पूरा स्क्रिप्ट ही कंसीडर करेगा इसलिए इफ के बाद अगर आप x की वैल्यू प्रिंट करके देखते हो वो प्रिंट हो जाएगी एंड 20 प्रिंट होती है तो इफ के बाहर भी अगर x की वैल्यू प्रिंट हो रही है मींस ये x अभी भी स्कोप में है गेटिंग ऑन नो तो इट इज नॉट टिल ब्लॉक लेवल इट इज minimum function and then the script level. ठीक है? So after if also we are able to use it. That's what here it is written. It is function scope, not block scope. Function scope means minimum scope function. And function नहीं तो फिर पूरे script. ठीक है? Okay. See here. In this I'll show you. Simple if चाहिए रहेगा तो pick करो if. Condition दे दिया. अब मैं ऐसे condition देता हूँ जो sure true ही है. 10 less than 100, 10 less than 20. ये ट्रू ही रहने वाला है अंदर आके एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं with the value 100 suppose and after that if block I am printing the value of x. If the same thing you try to do it using let, ये सेम लेट से करोगे तो लेट का स्कोप इफ तक ही होगा तो इफ के बाहर अगर आप x एक्सेस करने गए इट विल गिव यू एरर रेफरेंस एरर ठीक है सी इज इट प्रिंटिंग 100 आफ्टर इफ खत्म होने के बाहर भी हम x एक्सेस कर पा रहे हैं एंड वो 100 प्रिंट कर रहा है इसका प्रूव है व्हाट डज इट प्रूव दैट इट इज हैविंग स्कोप नॉट एट ब्लॉक लेवल ओके इसका स्कोप ब्लॉक लेवल तक नहीं है ठीक है सम मोर एग्जांपल्स ओके और भी एग्जांपल देता हूं ये क्लियर है Sir, नाउ as I told, first wait for all the examples and then ask me the questions. Okay? I think after all the examples are over, your query may get solved. Let me complete with all the examples. Okay? And I'll solve you. I'll solve your question. I'll listen to you. Don't worry. Okay? So this part is clear. This if is clear. Then what I said, इसका minimum scope किधर तक था? Function level. तो हमने एक function बनाया. Function test where I'm creating one function. Now within that function, I'm creating one variable with the name x equal to 10, where x equal to 10. Then I'm creating a if block. Okay? And within if also, I'm again declaring one x, but it is not going to create a new x. ये नया x declare नहीं होने वाला है. Getting? ये x यही x है क्यों क्योंकि ये दोनों where से डिक्लेयर हुए हैं एंड एज दे आर where they are not going to have if scope उनका minimum scope block level है getting so when I'm writing if inside if I'm redeclaring x वापस एक x redeclare कर रहा हूं using
वेयर तो भी ये एक्स नया नहीं है। क्यों? क्योंकि एनीवे इफ लेवल तक स्कोप होता ही नहीं है ना वेयर का स्कोप तो कम से कम फंक्शन लेवल है। वेयर का स्कोप ये मिनिमम कौन से लेवल तक है? फंक्शन लेवल। So what it does is it is storing 20 in this x only. It is not creating a new one. Getting? कोई नया नहीं बनाता, ये 20 इस x में स्टोर करेगा। जब आप if के अंदर प्रिंट कर रहे हो ये लेटेस्ट 20 प्रिंट, if खत्म तो बाहर जब x प्रिंट करोगे तो वो ये वाला ही मॉडिफाइड x दिखेगा, क्योंकि उसने ये 20 ये वाले x में ही स्टोर किया। हाँ, अगर यही सेम लेट से करते थे, लेट so when if is over, that inner x is gone, getting? And the outer x is again active. And जब let रहता था, तो उसने अपना अपना x बनाया रहता था। वो x फंक्शन का और ये x if का। If खत्म, ये x died. Getting? So that time here it will print 20 and here it will print 10 again. Because in that case, they both are different. That x will be of if, that x will be of test. करेक्ट? तो वो मेन फीचर है वेयर का, कि वेयर का कम से कम स्कोप क्या होता है। द मिनिमम स्कोप ऑफ वेयर इज द ब्लॉक लेवल, सॉरी फंक्शन लेवल, एंड फंक्शंस नहीं रहेगा तो स्क्रिप्ट लेवल। ठीक है, तो देखो ये एग्जांपल में ये x तो ये 20 है, बट इधर जब आओगे तो इज इट अगेन 10? नो, क्योंकि ये 20 उसने इसी x में चेंज कर दिया। करेक्ट? 20 ओनली चेंज्ड इन इफ ब्लॉक। Okay, see here, I'll show you with an example. Function, make function बनाता हूँ test where, right? अंदर मैं एक variable बनाता हूँ, I'm taking y, not to confuse with that x, 10. Then I'm creating one if, ठीक है? If, simple if, condition true ही देता हूँ, which will be always true. Within if again where y I'm making with 20. Inside if in a console, I'm printing the value of y. Getting? Remember this y will be 20, but it has changed this 20 to this y only. It has not created a new y. उसने अपना एक नया y नहीं बनाया ये if ने। ये if ने ये कौन सा वाला y ही लिया है, ये आउटर y, क्योंकि if लेवल तक स्कोप ही नहीं होता है। एंड अगेन मैंने लिखा है console.log y। ठीक है, अब ये टेस्ट तो करना पड़ेगा, तो ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, राइट? तो यहां तो क्या प्रिंट हो ही जाएगा 20 if I give, एंड यहां क्या प्रिंट होगा? 20 ही प्रिंट होने वाला है, बिकॉज द इनर y, ये if ने जो y चेंज किया है वो इसने ये वाले y में ही चेंजेस किया है। इसने अपना खुद का एक सेपरेट y क्रिएट नहीं किया है। एंड नाउ आई कॉल दैट टेस्ट। गेटिंग? आफ्टर कॉलिंग दैट टेस्ट you'll come to know, I'll rerun it. Can you see? Is it printing both y 20 only? ये वाला y तो 20 ही प्रिंट हुआ। गेटिंग? और यहां जब आते हो तो भी 20। क्यों? क्योंकि इनसाइड इफ जब आपने 20 y को असाइन किया है, इट हैज असाइन टू दिस y। भले हमें लगता है कि ये नया y रहेगा और वो ये y फंक्शन का है और ये y इफ का है, नो, वेयर से डिक्लेयर किया है, इसलिए उसका स्कोप कौन से लेवल पे ही रहने वाला है। एज यू हैव डिक्लेयर्ड इट यूजिंग वेयर, its scope is limited till function, and no function then script level. ठीक है? So I hope this example is clear to you. And about hoisting, I'll tell you. Hoisting का concept भी बताया था। Hoisting means using a variable before the hoisting concept comes into picture. When, if you're declaring a variable or you're using a variable before its declaration, you're using first and you're declaring later, then what does JavaScript engine does? It just moves that declaration to the beginning of the scope. That declarations are shifted up to the beginning of the scope. But when it shifts it to the beginning of the scope, it just keeps it undefined.
कुछ वैल्यू देता नहीं है, उसको जस्ट अनडिफाइंड रखता है। करेक्ट? तो देखो, यहां मैं पहले एक वेरिएबल यूज कर रहा हूं, बट उसको डिक्लेयर बाद में कर रहा हूं। console.age, where age equal to 25, console.log age. Now, in this context, can you see you're using a variable before its declaration? You're declaring here and using first. So, hoist income. So, will it shift this declaration to the beginning of the loop? ये लूप नहीं, सॉरी, टू द बिगनिंग ऑफ द स्कोप। तो स्कोप के बिगनिंग पे शिफ्ट कर दिया, बट शिफ्ट किया बट उसको अनडिफाइंड ही रखा, इसलिए यहां वो अनडिफाइंड आएगा। और बाद में वो इनिशियलाइज हो रहा है, तो ये इनिशियलाइज्ड वैल्यू, बट इट वोंट गिव एनी एरर। इट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी एरर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सी console dot log, I'm printing a variable age, and then I'm declaring variable age equal to 49, and then I'm printing that age. ठीक है? तो जनरली जो स्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस होते हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं चलता है, जैसे सी प्लस प्लस पढ़ा रहेगा या जावा, उसमें ऐसे कभी होता नहीं है कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर यूज किया और बाद में डिक्लेयर किया। अगर ऐसे करने गए वो ऑटोमेटिक डिक्लेयर एरर ही देगा, वो बताएगा यू कैन नॉट यूज अ वेरिएबल बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, प्लीज डिक्लेयर इट फर्स्ट एंड देन ओनली यूज इट। करेक्ट? बट जावास्क्रिप्ट इंजन होइस्टिंग कंसेप्ट अप्लाई करता है, बट ये डिक्लेरेशन जब स्कोप के ऊपर लेके जाएगा उसको अनडिफाइंड रखेगा, इट विल नॉट इनिशियलाइज इट। करेक्ट? कैन यू सी? First age is kept as undefined, and second age is initialized to 40. So it is not second, it is the same age which is now getting value 49. Previously it was of data type undefined, तो previously वो variable declare हो गया क्योंकि वो shifting हो गया ना ऊपर, बट वो क्या डेटा टाइप का रह गया? अनडिफाइंड डेटा टाइप। एंड बाद में जब 49 मिल गया तो वो नंबर डेटा टाइप का बन गया। डेटा टाइप चेंज हो सकता है ना, इट इज जावास्क्रिप्ट, इट इज लूजली टाइप, the variable can change its data type timely. ठीक है? तो hope the concept is clear. Now you can ask me so that हम लोग second concept पे जा सकते हैं। Okay? So now someone wanted to ask me something. Huh? I think someone wanted to ask something, but I told wait, सर let me complete. हाँ Huh? सर, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ है जैसे कि अभी आपने दिया So था ना that time कि it won't. Huh? हाँ So then 10 what? इज Huh? लेस देन 20, Then it won't या go in if. Getting? So when the condition is false, in this case, okay. करेक्ट। So as the condition, if suppose it is false, it won't go. Then it will use this where only. ओके। Getting? वो रीडिक्लेयर होगा नहीं ना, जस्ट चेक करो। देखो ये false देता हूँ। Okay. So as it is not going to get redeclared, it will use this value only as 10. That time it will print 10. See, 10 ही रह जाता है। ओके, Okay. गॉट इट। पर्पसली ट्रू क्यों रखा? क्योंकि वो रीडिक्लेयर हो रहा है ये बताना था। ये बताना था कि ये रीडिक्लेयर हो रहा है, wheres can be redeclared, and you we wanted to justify that कि ये स्कोप लेवल में ब्लॉक लेवल स्कोप नहीं है, माने इफ के अंदर ये नया वेरिएबल नहीं बनेगा, ये यही वेरिएबल है जो सिर्फ उसी को रीइनिशियलाइज कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग ना? गॉट इट सर। Now we will move to the next one, that is let, which was introduced in JavaScript 6, that is 2015 JavaScript, and the later version. And they call it as the modern way, and it is always recommended in current situation. They say it is always a good practice to declare your variables using let for more secure script. Okay. Now, what is the speciality of let? That I'll tell you. Let is having a block level scope.
वही पॉइंट्स है, बट यहां देखो, वहां फंक्शन स्कोप है, यहां ब्लॉक स्कोप है। ओके, तो इफ यू क्रिएट एनी वेरिएबल विद इन अ ब्लॉक, जैसे इफ ब्लॉक है या सिंपल एनोनिमस ब्लॉक्स भी हो सकता है, तो इसके अंदर अगर मैं कुछ वेरिएबल बनाता हूं, लेट एक्स इक्वल टू समथिंग, ठीक है, तो let are having minimum scope, how much minimum, I'm calling it as the nearest scope is, जैसे फंक्शन वेर का नियरेस्ट स्कोप क्या था, फंक्शन, फंक्शन के बाद फिर स्क्रिप्ट, इसका नियरेस्ट स्कोप ब्लॉक है, ठीक है, तो लेट एक्स इक्वल टू 10 किया, एंड जैसे ये इफ खत्म हो जाता है, इफ शुरू हो गया, इफ खत्म हो गया, तो व्हेन द इफ इज ओवर, दैट एक्स इज डिस्ट्रॉयड, एक्स डाइड, क्योंकि एक्स का स्कोप इधर तक ही था, गेटिंग, एंड सपोज इफ के बाहर भी अगर लेट है, लेट एक्स इक्वल टू 20, ठीक है, रीडिक्लरेशन नहीं है, किसके जैसे, वेर के जैसे, अब भी हमने वेर किया था, वेर वेर, ओके, तो व्हाट इट डिड, इट डिडंट क्रिएटेड अ न्यू एक्स, उसने नया एक्स नहीं बनाया इफ के लिए, उसने वो बाहर के एक्स में ही 10 स्टोर किया और उसी को अपडेट कर दिया, यहां वैसे नहीं होगा, ये एक्स उसके स्कोप में, ये एक्स इसके स्कोप में, जैसे ये इफ खत्म हो जाएगा, ये इनर एक्स डाइड है, वी स्टार्ट यूजिंग द आउटर वन, बाहर अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग से x प्रिंट किया, तो इट इज गोइंग टू प्रिंट दिस x, getting, not this one. Why? Because the inner one is died the moment block is over, block खत्म हुआ, ये x डिस्ट्रॉय हो गया, ओके, तो एक तो पहले याद रखना है, let is having the nearest scope, minimum scope as block, block नहीं तो function, function नहीं तो script, वैसे, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, इट इज हैविंग ब्लॉक लेवल स्कोप। सेकेंड, रीडिक्लेरेशन नॉट अलाउड विद इन द स्कोप, अब बोलोगे यहां तो किया, बट वो स्कोप अलग है ना, वो इफ में डिक्लेयर हुआ, वो बाहर डिक्लेयर हुआ था, इफ का अलग है, इफ खत्म, वो अंदर वाला डाई, अगेन बाहर वाला एक्टिव हो गया या लाइव हो गया, तो एक ही स्कोप में दो वेरिएबल्स रीडिक्लेयर नहीं हो गए सेम नेम के, इट विल गिव अ एरर if you are declaring like this, okay, let x, and again declare कर रहे हो let x, ठीक है, let x एरर आएगा, प्रीवियस केस में नहीं आया था ना, उसने जस्ट रीडिक्लेयर, मैंने पहले नहीं नेम इक्वल टू राम रखा, फिर नेम इक्वल टू सीता, रीडिक्लेयर कर दिया, कोई प्रॉब्लम यहां नहीं आएगा, इट विल गिव अ एरर, it will not allow you to declare the same variable again within the same scope using let, therefore it is more secure, ठीक है, तो पॉइंट टू भी क्लियर है, पॉइंट वन, what I said, that is block level scope, redeclaration not allowed, re-initialization allowed है, ठीक है, री इनिशियल में री वैल्यू आप दे सकते हो, x इक्वल टू 10 दिया एंड थोड़े देर बाद उसकी वैल्यू मॉडिफाई कर रहे हो, x इक्वल टू 20 किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज ओके, लेट वापस आया तो एरर, ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट भी याद रखना है कि री इनिशियलाइज कर सकते हो, एंड फोर्थ पॉइंट याद रखना है, लेट इज होइस्टेड बट इट इज नॉट केप्ट एज अनडिफाइंड, लाइक वेयर, वेयर में क्या किया उसने, होइस्टिंग किया, बट उसको क्या टाइप का वेरिएबल बना के रख दिया, अनडिफाइंड, जस्ट नाउ एज का एग्जांपल दिखा है ना, देखिए यहां, देखो, you are trying to use a variable age before its declaration, you are declaring later and using it first, so the hoisting applied, it shifted this declaration to the beginning of the scope, ये डिक्लेरेशन स्कोप के ऊपर लेके गया, ठीक है, बट अनडिफाइंड रखा, इसलिए जब आप उसको यूज कर रहे थे तो एरर नहीं, जस्ट अनडिफाइंड दे रहा था, कैन यू सी, यहां क्या होता है, होइस्टिंग होता है, बट इट कीप्स इट इन अ
temporary dead zone. It's called a TZ. Getting? TDZ, temporary dead zone. Now you'll say, what is that temporary dead zone? Temporary dead zone is the place from where it is entering in the scope. स्कोप में एंटर हो गया, जहां से उसका स्कोप शुरू हो रहा है वहां से एंट्री, एंड जिधर वो पहली बार क्या हुआ है, डिक्लेयर, वो डिक्लेयर हो गया एंड वो अपने स्कोप में एंटर हो गया. स्कोप एंट्री कैन बी द स्क्रिप्ट, कैन बी फंक्शन, कैन बी ब्लॉक. स्क्रिप्ट में एंट्री, वो भी एक स्कोप शुरू हो रहा है, या फंक्शन के अंदर एंट्री हो रहा है वहां से भी स्कोप शुरू होता है, ब्लॉक में एंटर कर रहा है वहां से स्कोप शुरू होता है. तो प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज एंटरिंग स्कोप and the place where it is declared, this in between is called as a temporary dead zone. Getting? एंड इसके बीच में अगर वो वेरिएबल यूज हो गया, डिक्लेयर तो बात अभी कर रहे हो, बट इसके पहले ही आपने ये जोन में अगर यूज किया, तो लेट से अगर वो डिक्लेयर्ड हुआ रहेगा, तो हियर इट गिव्स अ एरर. गेटिंग? रेफरेंस एरर देता है. लेट cannot be referred in the temporary dead zone. बट सेम थिंग अगर वेयर से होता था, तो वो वैसे भी स्कोप के बिगनिंग में लेके गया है और उसको अनडिफाइंड रखा है. तो इसके बीच में कहीं भी यूज हुआ तो वो अनडिफाइंड करके यूज कर लेगा. इट विल नॉट गिव एरर, बट लेट एरर देता है, इट गिव्स अ रेफरेंस एरर. ठीक है, तो ऑलवेज याद रखना है, लेट होइस्टिंग होता है, लेट का होइस्टिंग मीन समझ में आया ना, that is shifting the declaration to the beginning of the scope. And when it is supposed to do that, ये declaration beginning में कब shifting करना पड़ता है, जब आप वेरिएबल पहले यूज कर रहे हो और बाद में डिक्लेयर कर रहे हो. फर्स्ट you're using and then declaring, then the hoisting come into picture. Concept of hoisting will come into action. But let का concept कैसे है, it keeps that variable in the temporary dead zone. Meaning, if you are trying to use that variable in that temporary dead zone, it gives you a error. It doesn't make it as undefined. So, ज्यादा सिक्योर है. इससे ये गारंटीड है कि आप लोग अगर एक कोई वेरिएबल पहले यूज कर रहे हो और बाद में डिक्लेयर, तो एरर श्योर है. आपको ऊपर डिक्लेयर करके ही फिर यूज करना चाहिए. ठीक है, एंड बाकी तो रूल्स समझ में है कि redeclaration not allowed, reinitialization allowed, hoisting is there, scope is not at function level, block level. सबके एग्जांपल्स बताता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा. तो मिनिमम स्कोप क्या है? मिनिमम स्कोप, जैसे वेयर का मिनिमम स्कोप फंक्शन लेवल है, वैसे इसका मिनिमम स्कोप ब्लॉक लेवल है. Cannot be redeclared in the same scope. If you try, it will give a error. Can be updated, modify कर सकते हो. Hoisted but not initialized. जैसे प्रीवियस केस में होस्टिंग हुआ और उसको इनिशियलाइज्ड एज अ क्या किया, अनडिफाइंड. अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप है ना. व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज्ड, इट इज अनडिफाइंड, इट इज केप्ट इन दैट टेम्पररी डेड zone. And what is temporary dead zone? I told you, it is that section where the scope start and where it is first declared. जहां से स्कोप शुरू हुआ और जहां वो डिक्लेयर हुआ, वो बीच का एरिया क्या होता है, टेम्पररी डेड जोन. बट लेट से अगर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और उसको अगर टी डी जेड में यूज करने गए, इट विल गिव यू अ रेफरेंस एरर. ठीक है, तो आई गिव यू एग्जांपल्स ऑफ दैट. पहले एक एक करके रीडिक्लेरेशन का एक एग्जांपल देखते हैं, ब्लॉक स्कोप का देखते हैं, फिर होस्टिंग का एग्जांपल देखते हैं. सब बताता हूं एक एक करके. पहले देखते हैं रीडिक्लेरेशन. सी, लेट नेम इक्वल टू एलिस, लेट नेम इक्वल टू बॉब. प्रीवियसली यही जब वेयर से किया कोई प्रॉब्लम नहीं आया, उसने एलिस को बॉब से रिप्लेस कर दिया. यस और नो? बट इस केस में देखो, जैसे ही रीडिक्लेयर करने गए, इट गिव्स अ सिंटैक्स एरर. आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड. एक सिंटैक्स एरर आएगा.
It is saying that ये नाम का वेरिएबल पहले ही क्या हुआ है, डिक्लेयर्ड। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। बट डिक्लेयर किया है एंड बाद में उसको सिर्फ अपडेट कर रहा हूं, चलेगा। डिक्लेयर कर लिया, अभी नेम एलएस था, बाद में उसको मॉडिफाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, अपडेटिंग इज अलाउड। व्हेन यू ट्राई टू प्रिंट इट विल शो यू अपडेटेड वैल्यू। ओके, आई शो यू दिस आउटपुट एज वेल। ओके, केयरफुली देखो, क्योंकि यही सब चीजें तो इंटरव्यूज में पूछते हैं। इंटरव्यू में यही बेसिक चीजें सब चेक किया जाता है। ठीक है, सी लेट name equal to ram if I do, and after some time let name is equal to, immediately it has started giving an error। देखो, ये VS कोड ही इतना स्मार्ट इनफ है, वो VS कोड ही उसको इंटरप्रेट करने जाने के पहले ही ये एरर दिखा रहा है। कैन यू सी नो? एंड फिर भी आपको ये रन करके देखना है, देख सकते हो। देखो इधर रेड लाइन आ रहा है, लेट से किया है इसलिए वो रेड आ रहा है, रीडिक्लेरेशन। कैन यू सी? cannot redeclare block scope variable name। अंडरस्टैंडिंग? चाहिए तो आप इसको रन करके भी देखो। See, is it giving a syntax error? Uncaught syntax. It is a syntax error. Identifier name has already been declared. ओके okay? ऐसा एरर वेयर के लिए नहीं आया ना, उसने सिर्फ रीडिक्लेयर कर दिया। ओके okay? अभी टाइमिंग के लिए इसको कमेंट में डालता हूं, और री इनिशियलाइज होता है कि नहीं देखते। री इनिशियलाइज मीन्स अगेन मॉडिफाई, तो इट विल अलाउ console dot log name, एंड उसके पहले अगर प्रिंट करता हूं console dot log, it will print the old value। ठीक है, दिस इफ यू रन, इज इट प्रिंटिंग? फर्स्ट टाइम राम प्रिंट हुआ, उसके बाद सीधा, तो उसकी वैल्यूज अपडेट कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, अभी बाकी के एग्जांपल भी देख लो, और फिर वापस अगर डाउट आए तो मुझे पूछ लेना। बट ये तो समझ में आया ना कि रीडिक्लेरेशन करने गए सिंटैक्स एरर है, बट सेम वेयर से किया तब नहीं आया। दैट इज द पिक्युलैरिटी। कह रहे हैं? अभी सेकेंड देखो, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है, इसका स्कोप कौन से लेवल पे है? मिनिमम स्कोप क्या है? ब्लॉक लेवल, नॉट फंक्शन लेवल। यही एग्जांपल जब मैंने वेयर से लिया था, देखो 10 लेस देन 20 वेयर x इक्वल टू 20, तो इफ खत्म हुआ तो भी वो वेयर है एग्जिस्टेंस में, वो डाई नहीं हुआ था, इसलिए जब यहां प्रिंट किया इट प्रिंटेड 20। इज इट राइट गाइस? if 10 less than 20, inside I created one variable where x equal to 20, if over, still that variable was existing because it was created using where. This is using let. As it is let, x is going to have the scope of if, and when if is over, x is gone. And as x is gone, you're trying to use it, it will give you a reference error. It will say x is not defined. कहेगा कि x नाम का वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, सी if 10 less than 20, let x equal to 10, and after that I'm trying to print it, console.log x। ठीक है, check the similar examples using where we did, but during where what happened? We did it using where inside if, but no problem, though it is in if, the scope is minimum function, but as no function to script level, the script scope. Therefore, here we were able to access, but now it will not. Is it giving an error, reference error? Why? Because this x is died. When the if is over, that x is died. It is let variable. Its scope is block level. So when the block is over, x is died, guys. Therefore, after if, when I'm trying to access it, it is giving an error.
reference error, X is not defined. These are also exceptions. You can trap it. JavaScript also has given exception handling concept and all. Okay, so X is not defined. You get an error. So with this, what is proved? With this, it's with this example only, it is proved that let have block level scope. Getting some more examples, I'll tell you. This is about functions. The same example I took for where using a function, if you remember. See, within a function, I created one variable where x equal to 10. Then inside if also I created, but did it create a new or did it just redeclared that x only? The outer x, which was 10, it has just modified that 10 only to 20, printed 20. When we came out, it was printing 20 only. Because in that case, two x were not created. The inner x which we created now using where, that is the same one, but not for let. See here, this let is having scope in that function. Okay, this let, outer let x is having scope in this whole function. But again, within the block, you have created x. So now that x is hidden. This x is now nearest. So again, a new x is created for if level, that x20 is printed. When if over, the inner x is died. Two separate x are created. One x is in the function, one x is within that if, because they have block level scope. So this x is printed, and when if over, that x is destroyed, it is died. And when you come out of if and you try to print x, getting it is going to print this x because now that is active. Because now you are in the function scope, you are not in that if scope. When you are in if scope, it will use its own x. When we come out of if, it will use functions x, that x is 10. With this, what it is proved, that this outer x is not replaced by 20. That 10 doesn't become 20. Understanding, guys? ये वाला 10 20 नहीं बन रहा है. दोनों ने अपना अपना x बनाया. ये if ने अपना खुद का x बनाया. if खत्म, ये x died. if के बाहर आए फंक्शन में, तो ये वाला वेरिएबल एक्सेसिबल है. तो वो x यहाँ प्रिंट होता है. ठीक है? ओके, सी, वो भी एग्जांपल दिखाता हूं. अब ये एरर है, इसलिए इसको मैं टाइम बिंग के लिए कमेंट डाल देता हूं. And we will create one function. I'll give name as test let. Inside, I'll create one variable let y equal to 10. If 10 less than 20, true लिखा तो भी चलेगा, कोई problem नहीं. Okay. And again inside I'm creating y. They are separate, guys, because they are declared using let. As ये let है. अभी बोलो नहीं कि रीडिक्लेरेशन है, एरर क्यों नहीं? स्कोप ही अलग है ना. एक ही स्कोप में रीडिक्लेयर किया रहता था तो एरर. ये स्कोप इफ का है और वो स्कोप फंक्शन का है. ठीक है? तो कंसोल डॉट लॉग वाई, इट इज गोइंग टू प्रिंट 20. वो उसके अपने स्कोप का y प्रिंट करेगा. तो उसके स्कोप का y 20 है. एंड इफ खत्म, जैसे इफ खत्म, इफ के अंदर का y डिस्ट्रॉय हो गया. अब इफ से बाहर आ गए फंक्शन में, तो फंक्शन वाला एक्टिव हो गया ना. विच वन इज एक्टिव? दिस वन. तो हियर इफ आई ट्राई टू प्रिंट console dot log y, it is going to access y of its scope. तो उसके स्कोप का y कितना है? 10 है. याद रखना है. तो इससे क्या प्रूव हुआ? उसने उसी y को 10 को 20 नहीं बनाया. दोनों के अपने अपने. पहले कॉल करता हूं, टेस्ट लेट. ठीक है? See, is it printing 2020? The same script which we did using where. That time when we came out, if के बाहर जब आ गए, तो वो 20 ही दिखा रहा था क्योंकि उसने वो उसी y में 20 बनाया था, यहां नहीं. अंडरस्टैंडिंग?
ओके, तो दैट पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। अभी होस्टिंग का एक एग्जांपल दिखा दो कि अगर आपने वेरिएबल पहले यूज किया और बाद में डिक्लेयर, बट डिक्लेयर किससे, वेयर से नहीं, लेट से, तो वो वेरिएबल टेम्पररी डेड जोन में जाता है। एंड विद इन द टेम्पररी डेड जोन इफ यू आर यूजिंग इट, it will give a reference error. It will not be undefined like where. Clear? देखो स्लाइड पे दिखा देता हूँ। See, this one. सेम एज वाला एग्जांपल ही, तो पहले मैं एज यूज कर रहा हूं, console.log age, एंड बाद में मैं लेट एज इक्वल टू 25 कर रहा हूं एंड फिर प्रिंट कर रहा हूं। तो होस्टिंग हुआ, बट ये वेरिएबल क्या हुआ है, इन अ टेम्पररी डेड जोन। तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू ट्राई टू यूज अ वेरिएबल, अभी टेम्पररी डेड जोन क्या है, जहां से स्कोप शुरू हुआ एंड जहां वो पहली बार डिक्लेयर हुआ, वो पार्ट होता है डेड जोन। तो अभी ये तो हमने स्क्रिप्ट के बाहर लिखा है, तो ग्लोबल ग्लोबल सॉर्ट ऑफ मैंने स्क्रिप्ट लेवल स्कोप है। तो स्क्रिप्ट में एंट्री करते ही, स्क्रिप्ट के अंदर एंट्री करते ही डेड जोन शुरू हुआ, और डेड जोन कहां खत्म हुआ, जहां ये डिक्लेयर्ड है, लेट एज। अब इसके बीच में अगर कहीं भी वेरिएबल यूज हुआ, तो इट विल गिव यू अ रेफरेंस एरर। Whereas if the same thing you are doing it using where, here it will keep it undefined. Understanding? This is more secure. Using let is more secure way of writing script. देखो, console.log age, and फिर लिख रहा हूं let age equal to 20, एंड फिर अगर मैं प्रिंट करने जाता हूं console.log age, getting? It is going to generate error for this access, क्योंकि आपने पहले एक्सेस किया और बाद में डिक्लेयर। तो हुआ क्या, मैंने कहा कि टेम्पररी डेड जोन, टेम्पररी डेड जोन के बीच में अगर वेरिएबल यूज होता है, रेफरेंस एरर, नॉट अनडिफाइंड। दिख रहा है, इज इट गिविंग रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन बाद में हो रहा है और पहले, तो क्यों, क्योंकि वो लेट से किया। अंडरस्टैंडिंग? एंड ये अगर निकाल दिया, तो ऑब्वियसली फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं ना, डिक्लेयर हो रहा है और बाद में यूज हो रहा है। गेटिंग? एज 20 जो है वो प्रिंट हो गया। तो रूल समझ में आया ना? आई होप क्लियर। ठीक है, जस्ट ये डेफिनेशन पढ़ लो, फिर आपका डाउट रहेगा तो पूछ लो। ओके, देन द टेम्पोरल डेड जोन इज द टाइम बिटवीन एंटरिंग अ स्कोप। नाउ ये इसका डेड जोन कहां से शुरू हुआ, ये मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है, तो इसका डेड जोन यहां से शुरू हुआ जहां स्क्रिप्ट में एंट्री किया। बट ऐसे हो सकता है कि ये पूरा लॉजिक मैंने किसके अंदर लिखा है, जैसे ये 3 लाइंस किसी फंक्शन के अंदर लिखा है, तो फंक्शन की एंट्री डेड जोन का शुरुआत है। ये अगर लाइन किसी इफ के अंदर है, तो इफ की एंट्री डेड जोन का शुरुआत है। तो एंट्री एट दिस, फ्रॉम वेयर द स्कोप स्टार्ट, उधर की एंट्री, एंड जहां वो डिक्लेयर हुआ है, वो टाइमिंग डेड जोन। So the temporal dead zone is the time between entering a scope and the actual declaration of let or const, during which the variable exists but cannot be accessed. उनका कहना वेरिएबल है बना, बट उसको एक्सेस करके नहीं दे रहा है। तो अगर टेम्पोरल डेड जोन में इसको एक्सेस करने गए, इट विल गिव अ रेफरेंस एरर। एक्सेसिंग इन दिस फेज थ्रोज रेफरेंस एरर। ये एरर्स भी जावा जैसे एक्सेप्शंस ही है, याद रखना। जावा में कैसे एक्सेप्शंस रेज होता है, एंड देन यू कैन हैंडल दोज एक्सेप्शंस बाय ट्राई कैच एंड ऑल। हियर आल्सो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज देयर, यू कैन हैंडल देम। ठीक है, तो होप दैट पार्ट इज क्लियर। नाउ इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी। नो और क्लियर? क्लियर सर। यस। श्योर ना? ओके, ठीक है, तो सर नाउ, हाँ, अगर हम फंक्शन के बाहर अगर डिक्लेयर किए तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर?
फंक्शन के बाहर, फंक्शन फिर भी वो इससे वो ग्लोबल हो गया ना सर फिर। नहीं, डिक्लेयर मींस आई डिडंट अंडरस्टूड, लाइक लेट किसके बाहर किया? नहीं नहीं, लेट से पहले जो आप बता रहे थे सर। हाँ, यहाँ। हाँ, तो कोई भी फंक्शन से पहले अगर कोई डिक्लेयर किए या लेट को कर सकते हैं फंक्शन के बाहर डिक्लेयर, या हाँ, होता विद है, इन। क्यों नहीं? हम्म। क्यों नहीं? अभी ये लेट मैंने स्क्रिप्ट में किया है ना, ये वाला राइट। लेट कहाँ किया है? स्क्रिप्ट, तो इसका स्कोप पूरे स्क्रिप्ट में। ओके। ये लेट मैंने फंक्शन के अंदर है, तो इसका स्कोप फंक्शन तक ही है। हम्म। ये जो y है वो फंक्शन के अंदर है, तो फंक्शन के बाहर नहीं एक्सेस हो सकता है, वो फंक्शन तक ही। ठीक है। बट हाँ ये हाँ सर। एज मैंने स्क्रिप्ट में किया है, तो उसका स्क्रिप्ट लेवल है। हाँ, बट स्क्रिप्ट में भले रहेगा तो भी इसके ऊपर नहीं, इसके बाद पूरे स्क्रिप्ट में कहीं भी एक्सेस हो जाएगा ये एज। इसके बाद अगर जितना भी कोड है सब जगह पे वो एज एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि वो स्क्रिप्ट में बना है। ओके सर। ओके। फिर कॉन्स्ट भी रह गया, इट विल टेक टाइम टू